Welcome back, and we were talking about decision making, different techniques, qualitative, quantitative मैंने आपसे डिस्कस की और आप सबको जो मैंने कुछ टेक्निक्स बताई जिसमें के ऑपरेशंस मैनेजमेंट के हवाले से आपकी टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग और क्यूइंग मॉडल, इस तरह के डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। सो वो तमाम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू यूज द लिंगो, टोरा, these type of softwares जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बड़े कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा नो डाउट कि हमारे पास आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कई मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सैप सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इनके अंदर भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जेनेरिकली वो मौजूद होती है और आप कई हवालों से अपने फैसले वो कर सकते हो बेस्ड अपॉन दैट computer intelligence these softwares are going to have, these systems are going to have. If there is any question or query in your mind before I start again, so you can turn on your microphone and ask. Ji, anyone, any question please? Okay dear, if no question is coming in तो हम अपनी discussion को एक step आगे और लेकर चलते हैं and I hope the slide is visible and my voice is audible. So we were talking about problem definition and I said कि incomplete definition is more dangerous than wrong definition. और उसके बाद another important thing which your author has identified कि one must always check and recheck the definition against all the observable facts. कि जितने भी आपके पास रियलिटीज अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हैं, किसी भी प्रॉब्लम की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आप उन सब चीजों को अपनी डिस्कशन में, अपनी विजिबिलिटी में, अपनी ऑब्जर्वेशन में वो रखो सो दैट आपकी नजरों से जो अवेलेबल एस्पेक्ट्स हैं वो ओझल ना हो। Then one must remain very cautious about the different aspects of the problem. जैसे आपको मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम के कई पहलू हो सकते हैं, सो उन तमाम के बारे में भी हमें इदराक वो होना चाहिए। Then your author says that the problem should be closely observed again for any variation. हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हमें बताई गई और जितना अरसा हम डिसीजन मेकिंग में ले रहे हैं उसके दौरान उस प्रॉब्लम में कोई नई शक्ल इख्तियार कर ली हो, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट्स में भी प्रॉब्लम को देखते रहना चाहिए टाइम फ्रेम के हवाले से कि उस प्रॉब्लम में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या वेरिएशंस आ रही हैं और उन वेरिएशंस को हम कैसे टैकल अप वो कर सकते हैं। एंड नो डाउट देयर आर सो मेनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एज वेल टू डील विद सच सिचुएशंस कि आपने उन वेरिएशंस को किस तरीके से एलैबोरेट करना है, किस तरीके से डिस्कस करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम की डेफिनेशंस के साथ ही एसोसिएटेड हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स भी इवॉल्व होनी शुरू हो गई मैनेजमेंट साइंसेज में। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट जिडोका, एक जापानीज टेक्निक का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, और जिडोका का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम एट द सोर्स, और प्रॉब्लम को उसके सोर्स पे खत्म करने की कोशिश करो इससे पहले कि वो फर्दर प्रोसेस के अंदर अपना कोई आउटकम वो दिखाए। तो प्रॉब्लम टू बी आइडेंटिफाइड एट द सोर्स एंड टू बी रेक्टिफाइड एट सोर्स, इसको हम कहते हैं जिडोका। ठीक है, इसी तरह हमारे पास काइजन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट का एस्पेक्ट है, कानबान टेक्निक्स हैं, जस्ट इन टाइम टेक्निक्स हैं। तो बहुत से हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल वो कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड अगेन फॉर एनी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना। और हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रॉब्लम जितनी हमें बताई गई और जितनी उसकी असल हकीकत है, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। उसके लिए हमारे लिए जरूरी होगा कि उस प्रॉब्लम के साथ हमारा फर्स्ट हैंड इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, फर्स्ट हैंड नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है ताकि हम उसको बेहतर तौर इवेल्युएट वो कर सकें। अदरवाइज जो शवाहिद होंगे, जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, जाहिर है कि हमें उसी के ऊपर रिलाई वो करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन की जो ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, वो किस कदर है। फिर आपका ऑथर कहता है कि द प्रॉब्लम शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड अगेन फॉर एनी चेंज इन डिटेल्स और एक्सपेक्टेशंस। तो बाज़ औक़ात प्रायोरिटीज में तब्दीली आ सकती है, बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशन में तब्दीली आ सकती हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि प्रायोरिटीज में, एक्सपेक्टेशंस में, डिटेल्स में, ऑब्जर्वेशन में, किसी भी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है और उस तब्दीली के मुताबिक हमारे अपने डिसीजन मेकिंग को कहां पर क्या तब्दील वो करना है। Then Peter F. Drucker is talking about another point in detail, and the point is specifying the answer to the problem.
अब आंसर टू द प्रॉब्लम में जब आप डिस्कशन करते हो, तो बिफोर आई डिस्कस व्हाट वाज रिटन इन द आर्टिकल, दिस कोटेशन was echoing in my mind from Peter Drucker, and he said that effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. अब एक लीडर है, सपोजिटली वो बहुत क्रिज्मेटिक है, उसकी बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी तकरीर करता है, लेकिन उसने आउटकम नहीं दिखाए, हमारे पास टेंजिबल फिजिकल प्रूफ्स नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, तो वो लीडर जो कि बहुत अच्छा स्पीकर है, परहैप्स उसकी इफेक्टिवनेस चैलेंज हो जाएगी। जिसके बरक्स हो सकता है कि देयर इज समवन कि जिसके पास शायद की स्पीकिंग कैपेबिलिटी तो ना हो, लेकिन वो आउटकम्स ऐसे जनरेट करे विच आर रिक्वायर्ड, विच आर सस्टेनेबल, विच आर प्रॉफिटेबल, तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो ज्यादा होगी। So this is very interesting statement by Peter F. Drucker, and he said, I repeat again, that effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. अब जाहिर है कि जब हमने रिजल्ट्स की बात करनी है तो वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, केयरफुल, क्वांटिफाइड कि हम आउटकम अचीव क्या कर रहे हैं। So we have to define clearly the specifications about decision process as to what the decision has to accomplish, कि हमारे objectives क्या होंगे। और ये बात याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग में हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क वो करना सीखें। और स्मार्ट वर्क इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इट हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम। तो हमें चीजों को क्वांटिफाइड वे में लेकर चलना है, बिकॉज याद रखिएगा कि क्वालिटी कैन नेवर बी अचीव्ड। क्वालिटी इज जस्ट लाइक अ डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड। ये बात बहुत क्लियरली हमें पता होनी चाहिए। देयरफॉर हम जो चीज अचीव कर सकते हैं, जिसको टेंजिबली शो कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज क्वांटिटी। तो आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, अपनी डेली पर्सपेक्टिव के अंदर भी कोशिश करें कि चीजों को क्वांटिफाई कर सकें, बिकॉज क्वांटिटी को इवेल्युएट करना, क्वांटिटी को कंट्रोल करना और क्वांटिटी को अचीव करना, ये तीनों चीजें मुमकिनात में से हैं। उसके बाद आपका ऑथर कहते हैं कि डिफाइन क्लियरली द कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स अबाउट द डिसीजन, कि आपकी बाउंड्री कंडीशनिंग वो क्या है। बी क्लियर अबाउट अ डिसीजन व्हेन इट हैज टू बी अबंडेंट। आपको ये चीज भी क्लियर रखनी चाहिए कि आपने अपने फैसले से बैक ऑफ कब करना है। बैक ऑफ करने से मुराद ये है कि आइदर यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेड ऑफ और यू हैव टू चेंज योर डिसीजन। ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमें चेंज ओरिएंटेड होना पड़ेगा, इस वजह से क्योंकि बाज़ औक़ात अगर फैसला हमें सही आउटकम ना दे रहा हो, तो रादर देन शोइंग अप अवर एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, हो सकता है कि हमें अपने फैसले को तब्दील भी वो करना पड़े। तो फैसले के अंदर एक लचक का होना भी जरूरी है। नो डाउट फैसले का फर्म होना भी उतना ही जरूरी है। ये सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होगा, इस पे हम कोई ऑब्जेक्टिव बहस वो नहीं कर रहे हैं। Another important point जिसमें कि आपका ऑथर लिखता है कि the common cause of failure in a decision is unclear specification। जब हमें पता ही ना हो कि क्या अचीव करना है। जैसे आपको मैंने एक दफा रेफरेंस दिया था एलिस इन वंडरलैंड का, कि जिसमें एक डायलॉग हुआ था द कैट एंड एलिस के दरमियान, और वो डायलॉग ये था कि इफ यू डोंट नो वेयर टू गो देन एनी रोड विल टेक यू देयर। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या अचीव करना है, तो फिर हर फैसला सही है, हर बात सही है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट स्पेसिफाइड कि व्हाट टू डू। सो व्हाटएवर यू वुड डू वुड बी द डिसीजन, वुड बी द आउटकम, वुड बी द रिजल्ट, वुड बी समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। Now your author is now focusing upon a very interesting aspect। वो कहते हैं कि right decision को अब आप कैसे identify करोगे, कि which decision is actually the right decision। इस हवाले से before we elaborate the right decision, there is a very interesting discussion about the right decision और उसको evaluate करने के parameters क्या हैं, इसको तवज्जो से देखिएगा, and then I'll be discussing with you further details। And then your mind is on overdrive thinking about everything wrong with the decision that you've just made. How do you know if you've made the right decision?
If this is something that you can relate to, give this video a like and leave me a comment. In this video, I'm going to share with you 3 questions to ask yourself every time you're faced with uncertainty about that important decision, whatever the decision is to you. They'll help you to cut through that mind clutter to determine whether you've made the right choice, or to guide you to get clarity around what the right path is. You want to think of these questions as a 3-screen filter that you can pass your decisions and your big choices through to gain clarity on whether it's the right move. Hi, I'm Sade Zarai, and I help professionals to hack their careers, overcome their limiting beliefs, and confidently create the extraordinary life they deserve. Now, what tends to happen when you're faced with making important decisions is that your brain can get into a pattern of overanalysis. And since your brain is also designed to protect you from harm, it starts to alert you about all of the possible things that could go wrong, all of the what-ifs. Your brain, if left unchecked, has a natural tendency to dwell on the risks and the threats. It's designed to magnify what you focus on. Almost like that weird thing that happens when you're fixated on a new style of clothing or a new car model, and then you start to notice it everywhere. So what happens is when you start to focus on all the things that could go wrong, you actually prime your radar to notice things that confirm all of these beliefs that things will go wrong. And so these confirmations can actually end up convincing you to not even take that leap, to not make the move, to not make the change, because of the possibility that it might not work. But here's the harsh reality. You're never going to have a guaranteed outcome. You'll never know for sure if you'll reach success by taking one direction or another. And there are always going to be these what-ifs, especially if you look for them. So sometimes it's about making a decision that's not 100% right, because you can't know. Sometimes it's about being satisfied with 70 or 80% and not holding yourself to an impossibly high standard. What I recommend to the professionals we work with when they're deciding whether or not to make a decision, whether or not to pursue a particular path, is to ask themselves these 3 questions. These questions, which I'm about to share with you, become that filter that you use to pass all of your decisions and your big choices through to help you gain clarity about whether it is the right thing for you. So first up, the first question: will this path help me grow? You always want to be making decisions and following paths that help you grow as an individual. This may mean through challenge, through tests, through obstacles. It might mean that you have to be pushed outside your comfort zone and take more of a risk. But you know that in doing so, even if you don't get the exact intended outcome of success that you're looking for, you will be challenged as an individual, which will force you to grow and strengthen your character. So this is that very first question that you need to ask yourself. Will I challenge myself and accept that leadership position? Will I be able to gain experience in that new industry? Will this help me grow? Next up, the second question you need to ask yourself is this: is my decision based on ego? Are you doing it because you're chasing a title, a position or status, or something else that makes you feel good because it makes you feel superior to others? It makes you feel important, significant, validated? Here's the thing. We know from research that chasing titles and status won't make you happy. And it's actually a red flag that could indicate that you're trying to get some sense of fulfillment from something that won't bring it in the long run. It's called the hedonic treadmill, where we think that external things will bring us happiness, but when we actually achieve it, we eventually just bounce back to how we felt before. There's no real lasting change to our happiness. The other red flag here is approval. Are you making a decision to do or to not do something just because it's what others think you should or shouldn't do? We all have an innate, deep-seated emotional need for approval and validation, and it can actually be one of the strongest and most powerful motivators for behavior. This approval brings a huge amount of psychological safety and inner peace. But it's not the right reason to be basing decisions. You need to be invested in it for the right reasons. Because they want me to doesn't qualify. And the third question you want to ask yourself is, does this thing I'm deciding to do, this new job, this new country, this new path, does it excite me? Does the thought of it energize me? Even if you're a little anxious about what could be and the uncertainty, there has to be some spark, something deeply exciting about whatever it is you're doing. This is how you know that it's actually aligned with what you want deep down. Now, there are also 2 other considerations that you want to keep in mind. First, does my decision intentionally hurt anyone? If it does,
Are there things you can do to minimize the hurt? This will be personal to each individual, so you need to figure out what is right for you and what's right for the people around you. And the second question, do I have the means to make it happen? This one's probably more specific to people looking to, for example, start their own business. Let's say you have a full-time job, a mortgage, and a car loan, but your passion is to run a business, so you might quit your full-time job, but then you have no savings to live off or use as capital. And you're probably being a little bit negligent if you do that because you won't be able to pay your bills next week. Planning is important, and if now isn't the right time, then that's totally okay. At least you have the intention. It took me over 5 years of running a business concurrently with working full-time before I was in a position to go all in. And even then, we made sure that we had savings as a contingency and to use as capital to inject into the business. You just need a little wisdom and foresight. So, a quick recap of the 3-part filter questions to ask yourself. 1. Will this path help me to grow? If yes, then, is my decision based on ego, title, or status? If no, ask, does it excite me? If you get to this question and you say, heck yes, it excites me, then you have to follow your gut instinct. Now, things may go wrong, but you have to be okay with that. The best part about 99.9% of life decisions are that they are reversible, excluding having children or skydiving without a parachute. So think wisely about those. But with everything else, while it may take time, it can be reversed. You can come back from a decision that doesn't go to plan. But you will know that in taking that path, you learned something new. You expanded your mindset. You actually challenged yourself and tried something different. And you will always take that growth with you. So there you go. I hope you found this useful and that you can actually apply the 3-question filter to your next big decision, whether it's related to your career or even just a major life decision that you're needing to make. Of course, it's not going to apply to 100% of your decisions, but the principles are there to really just help guide you whenever you come to a decision in your life. In the comments, let me know your favorite strategy to determine if you've chosen the right path when it comes to you making important and really big life decisions. And of course, please like this. Okay, we have just heard the lady that how she was elaborating the methods with which we can validate our decision, either the decision was right or wrong. और एक पॉइंट इसमें बड़ा अहम मुझे लगा, एंड दैट वाज कि कोई फैसला जो हम कर रहे हैं वो फैसला कहीं हमारी ईगो की वजह से तो नहीं है, कहीं वो हमारे स्टेटस को, हमारे पोजीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो नहीं है. हमें ये देखना होगा कि वो फैसला क्या वाकई अपनी अफादियत रखता है और वो फैसला वाकई जनरल पब्लिक के हक में है, वो फैसला वाकई लोगों के राइट्स उनको दिलवा रहा है, और क्या ये हमारी ड्यूटी है, क्या हम उसको सही तौर पर फुलफिल कर रहे हैं. तो ये तमाम चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी जब भी कभी हम कोई फैसला कर रहे हैं, एंड इट शुड नॉट जस्ट बी बेस्ड अपॉन आवर ईगो. So Peter Drucker, in another very interesting statement, said that the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Okay, तो हमारे पास rationality का होना उस decision making के लिए वो बहुत जरूरी है. Now, coming to the topic discussion, जब वो right decision की बात कर रहा था Peter F. Drucker, he said that the decision जब हम उसको elaborate कर रहे हैं तो the boundary condition would distinguish between the right compromise and the wrong compromise. कि हमने जो trade off किया उस trade off की cost हमें क्या bear करनी पड़ रही है. Number 2, effective executives should be able to identify the right trade off जो हमने पिक करना है दो चीजों के दरमियान. और obviously उसके लिए हम एक और expression भी use कर सकते हैं which is known as opportunity cost. अब आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपकी इम्प्लिसिटली मोस्टली एसोसिएटेड होती है फैसलों के साथ, और हमें वो दिख नहीं रही होती, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू पे. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन लाइफ एज वेल. इसी तरह ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, बाज़ औक़ात लाइफ में हमारा कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है. सो उस अपॉर्चुनिटी लॉस को भी सोचना वो हमारे लिए जरूरी होगा. और याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी लॉस में इट इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम किस किस्म की कॉस्ट और लॉस को वो फेस कर रहे हैं किसी भी फैसले को पिक करने के दौरान. So the decision maker should not be focusing upon the question what is acceptable. उसको ये देखना है what is right.
सही चीज क्या है उसके बारे में फैसला वो करना चाहिए। जैसा कि सूरत असर की आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वतवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, तो हमें हक बात की ऊपर फोकस करना है, हमें जो सही चीज है उसको देखना है, ना कि हम सिर्फ पॉपुलर और एक्सेप्टेबल और पॉलिटिकल चीजों को फोकस वो रखें। सो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपके ऑथर ने यहां पर आइडेंटिफाई की, एंड ही सेड कि द फैक्टर ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर, और रिस्क को आप जीरो ह्यूमन लिमिट्स के अंदर शायद कभी नहीं कर सकते। पीटर एफ ड्रकर इसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक के कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू एक्शन। यहां पर पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि कन्वर्टिंग, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू एक्शन, रिमेंबर कि कन्वर्टिंग डिसीजन इनटू एक्शन इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, बिकॉज थ्योरी बिल्डिंग या आपकी जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का जो स्टेज और स्टेप है वो इतना लेंथी नहीं होता जितना कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का या एक्शन प्लान का जो स्टेप होता है वो लेंथी और ट्रिकी होता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि वी शुड बी हैविंग प्रॉपर रिसोर्सेज to meet up the time requirements and the resource requirements related to the action side of the decision making. Secondly, आपका author कहता है कि action requires a lot of commitment from the start, and third, decision always comes with work assignment and responsibility. And the fourth point is कि policy without action plan is useless. तो अब आपको उसकी पॉलिसी क्या है, उसके पॉलिसी एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना भी जरूरी होगा जब आप एक्शन ओरिएंटेशन की बात वो कर रहे हो। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी लॉयल्टी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट विद द सिचुएशन, विद द इशू, वो होनी भी जरूरी है, वरना लोग बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं और वो उस फैसले को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाते हैं। Then your author says that the decision should be disclosed to concerned people with immediate effect so that transparency और clarity वो आ सके, और शेयरिंग से लोग ये जान सकें कि हम कोई भी फैसला क्यों कर रहे हैं और उसके हमारे मुतवक्को आउटकम्स वो क्या होंगे। So the action must also be appropriate to the capacities of the people who have to carry it out. ओके और जाहिर है कि लोगों की काबिलियत को मद्देनजर रखकर ही हम किसी फैसले को बरूए-कार ला सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की भी है कि जब वो कोई फैसला कर रहा है जिसमें कि ऑब्वियसली फॉलोअर्स इन्वॉल्व होंगे, तो फॉलोअर की विलिंगनेस, रेडीनेस, इन्वॉल्वमेंट, विल, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। बिकॉज अगर फॉलोअर्स वहां पर कमिटेड नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी राइट कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफिशिएंसीज नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली अकेला लीडर शायद उस बात को पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। So action commitment becomes doubly important when people have to change their behavior, habits and attitudes. और अक्सर औकात हमें जो resistance का सामना करना पड़ा, that is more in the implementation stage as compared to the decision making stage. ठीक है, सो हमें इस चीज को भी देखना है कि लोगों को उस डिसीजन के मुताबिक जो तब्दीली लेकर आनी है उसमें बिहेवियर में, हैबिट्स में, एटीट्यूड्स में, कंसर्न्स में, प्रायोरिटीज में, एक्सपेक्टेशंस में कहां पर क्या क्या चीज हमें रिक्वायर्ड होगी जो कि लोगों को हो सकता है कि तब्दील वो करनी हो। पीटर एफ ड्रकर देन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट कि जब आपने एक्शन ले लिया और अब आपको फीडबैक का इंतजार है, तो द डिसीजन फीडबैक से रिलेटेड आपका ऑथर लिखता है, फर्स्ट एक बड़े इंटरेस्टिंग कोटेशन इसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड। जैसा हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में भी कहा था कि हमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना आना चाहिए, हमें उस फीडबैक को ज्यादा जानना चाहिए जो फीडबैक्स वर्ड्स की शक्ल में शायद हम तक नहीं पहुंचा। लोगों की नजरों में क्या है, लोगों के दिलों में क्या है, लोगों के बर्ताव में क्या है, उनके नॉन वर्बल क्यूज हमें क्या बता रहे हैं। बहुत औकात ये चीजें ज्यादा अहम होती हैं बनिस्बत उन अल्फाज के जो उन्होंने आपके मुंह पर आपके लिए बोले। सो बहुत केयरफुल रहिएगा कि कम्युनिकेशन के अंदर इन बिटवीन द लाइंस को पढ़ना वो बहुत जरूरी है, इन बिटवीन द लाइंस को सुनना वो बहुत जरूरी है। जैसा आपको मैंने वो जॉन कीट्स का एक मिसरा बताया था कि अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन हर्ड, तो आपको अक्सर औकात वो नेवर सेड वर्ड्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना चाहिए, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक व्हिच यू कैन हैव। अब डिसीजन मेकिंग के हवाले से योर ऑथर सेज कि इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग हैव टू बी बिल्ट इनटू डिसीजन टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस टेस्टिंग। ओके, तो जब तक आपके पास कोई चैनल नहीं होगा, प्रॉपर मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर क्राफ्टेड नहीं होगा रिपोर्टिंग का, तो उस वक्त तक ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सो द बेस्ट डिसीजन हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग।
ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी केयरफुली याद रखिएगा कि द बेस्ट डिसीजन हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज बेस्ट डिसीजन हायर द रिस्क कैरी करेगा, और जब वो हायर द रिस्क कैरी करेगा तो उसमें ऑब्वियसली हायर द रिटर्न्स जो हैं वो आपको मिल पाएंगे। देयरफॉर वो गलत भी हो सकता है। आप ये मत समझें कि सिनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, सिनर्जी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। Again remember कि feedback should come from all the concerned stakeholders। तो 360 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका ऑथर वो एडवाइस करता है कि तमाम लोग वो पार्टिसिपेट करें ये बताने के लिए कि आया आपका फैसला सही था या गलत था। इसी तरह डिसीजन मेकर्स नीड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर फीडबैक इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड फिगर्स। तो चीजों को क्वांटिफाइड वे में डॉक्यूमेंट करना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करोगे अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आउटकम्स को, उस वक्त तक आपके लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना और फ्यूचर करेक्शंस की तरफ जाना वो मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद हम एक और आर्टिकल के ऊपर बहस शुरू करते हैं, एंड दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल बैरियर्स टू डिसीजन मेकिंग। आप इंटरपर्सनल बैरियर की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर है कि दो लोगों के मबैन जो कम्युनिकेशन गैप होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नॉइज क्रिएट हो सकती है, आपके फैसले के अंदर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के अंदर डिस्टॉर्शन आ सकती है, आप डिसेप्शन के शिकार हो सकते हो। बिकॉज डिसेप्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है कि डिसेप्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रिसेप्शन। ठीक है, आपको क्या कुछ रिसीव हुआ, उसमें से क्या कुछ परसीव हुआ, इसके दरमियान जो फर्क होगा दैट इज व्हाट यू कॉल डिसेप्शन। तो डिसेप्शन अक्सर औकात आ जाती है, धोखाधड़ी की दास्तान रकम हो जाती है कि जहां पर इंटरपर्सनल बैरियर्स कैन बी वन ऑफ द वेज जिससे कि इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वो कम हो जाए। इस हवाले से देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन from the author of 7 Habits of Highly Effective People, which is Stephen Covey। उसने कहा कि a cardinal principle of total quality escapes too many managers। You cannot continuously improve interdependent systems and processes until you progressively perfect interdependent interpersonal relationships। Now, how beautifully उसने जो इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स हैं उसको एलैबोरेट किया कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है दैट इज द परफेक्ट इंटरडिपेंडेंस। एंड अगेन स्टीफन कवी इस बात के एडवोकेट हैं कि इंटरडिपेंडेंस इज मच बेटर देन इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। सो उस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है एज प्रोवाइडेड बाय स्टीफन आर कवी, जिसमें कि वो प्रोएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी इसके ऊपर अपनी एक डिटेल बताएंगे और हम ये जान पाएंगे कि इंटरडिपेंडेंस जो है उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम उसको मैनिफेस्ट वो कर सकते हैं। सो लिसन केयरफुली। We're tested every day in 1,000 little ways, in the ordinary things. And if we are proactive in those things, it gradually develops extraordinary capability in handling major setbacks or disappointments. But oftentimes, we look into the more spectacular, the more dramatic, the larger issues to see the obvious energy of proactivity, of habit one. For instance, Viktor Frankl, the Austrian psychiatrist, imprisoned in the death camps of Nazi Germany because he was a Jew, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised in the Freudian tradition that you're basically a product of your childhood. He worked on that assumption, that paradigm. But while he was in the death camps, he began to observe some very interesting things. Some people were animals, others were saints, with the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were cremated. He expected the same fate. For some reason, they saved him for experimental purposes. One day, they stripped him naked, put him under white light, and began to perform those ignoble sterilization experiments upon his body, and he discovered what he called the last
human freedom. The power to choose my response to any condition, to anything that happens to me, he called the last human freedom. And he cultivated a sense of meaning so that he saw himself in his imagination lecturing to his students in Austria following his release from the death camp about the very experiences he was having at the time, about the insights, the learnings he was acquiring. And he came to postulate that the highest value at all is the power to choose your attitude in situations over which you have no control. That was the last human freedom. If you want to see evidence of that, how many of you have ever had a loved one, a dear friend, family member, go through a terminal illness with a magnificent attitude? How many have experienced that? Now look at the hands, look at the number. How many of you were enormously inspired by such modeling? Same hands. I just saw that with my sister, Marilyn, who just recently passed away. The night before she died, she told me, my only desire is to teach my children and my grandchildren how to die with dignity and with a desire to contribute and to live life nobly and based on principles. And the cancer inside her lungs was like a tree growing up. But her whole focus during the months, even years that preceded this, was constant teaching. Those children and grandchildren and friends and loved ones will be inspired and ennobled by such modeling, such mentoring the rest of their lives. Between what happens to us, the stimulus, whatever has happened to us, or what is now happening to us, between that stimulus and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. In these choices lie our growth and our happiness. In other words, with the right choices, eventually the response we choose begins to influence the stimulus. This is what Viktor Frankl discovered. And through exercising his memory, that is his self-awareness, and his imagination, and his conscience, by asking questions such as, what is this situation asking of me, instead of, what do I ask of it? Why are they doing this to me? And also by exercising his own independent will, this freedom became larger and larger until it was larger than his Nazi captors. Not his liberty. Liberty is a condition of the environment. Liberty is a condition of the externals. Freedom is a condition of the person, of the internals. We have control over our freedom, not in the short run over our liberty. However, in many situations, not necessarily all, the more you control your freedom and expand and deepen it, eventually you will influence the liberty of your life, the options, the alternatives that are available to you. Eventually, your head will create your world. Your response to the stimulus will eventually influence the stimulus. And to some degree, he experienced that. He also had the hypothesis, or tried to look at the hypothesis. What enables these people in the death camps to survive? Is it their survival skills? No. Is it their intelligence? No.
Is it their health? No. Those things were eventually equalized, lost. Helped a little initially, but eventually they were gone. Is it their family structure? No. The thing that enabled survival was a vision of the future, a sense of meaning about a work yet to do, a contribution yet to make. And this became the basis for his brilliant autobiographical account of these experiences called Man's Search for Meaning. Even a friend of his was so miserable he wanted to commit suicide, and Frankl pressed him, "Why don't you?" He said, "Because if I predeceased my wife, it would make her so unhappy and miserable, and I love her so." That alone gave him meaning to survive. And he would constantly ask the question, what is life asking of you in this situation? Don't let the things you can do nothing about interfere with the things you can do a great deal about. So we have just gone through a detail of proactive and reactive aspects as discussed by Stephen R. Covey, और उसने बड़ा क्लियरली और बड़ा इफेक्टिवली ये बताया कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, रोजमर्रा की जिंदगी में, क्राइसिस मोमेंट्स में किस तरह से सरवाइव करना वो आपके लिए मुमकिनात में शामिल हो जाता है। कब आपको फ्यूचरिस्टिक होना है, कब आपको रियलिस्टिक होना है, कब आपको अपने सर्कमस्टांसेस को एवेल्युएट करना है, कब एक ही सिचुएशन में रहते हुए अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट करना है। सो ये तमाम के तमाम चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। कई तरह के फैसले हमारी जिंदगियों में हो सकते हैं। एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, फैसले जंग के मैदान में भी किए जा सकते हैं, फैसले रोजमर्रा की रूटीन में भी किए जा सकते हैं, फैसले होटल में बैठकर खाने के मेन्यू के बारे में भी किए जा सकते हैं, फैसले सैर पे जाने के लिए डेस्टिनेशन के हवाले से भी किए जा सकते हैं, फैसले बेशुमार तरह के एस्पेक्ट्स में, बिजनेस एस्पेक्ट्स में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में वो किए जाते हैं। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फैसला क्या है, नोयत ऑफ फैसला क्या है, फैसला करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात और मामलात कैसे हैं, इंटरपर्सनल डिपेंडेंसीज और रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कहां पर हमें प्रोएक्टिव होना है, कहां पर हमें रिएक्टिव होना है। तो ये तमाम चीजें मिलजुल कर हमारे फैसलों को लीड करेंगी। So interpersonal barriers to decision making के लिए आपका ऑथर लिखता है कि the actual behavior of top executives is often in contradiction with effective executive action. Number 2, वो कहता है कि the contradiction between saying and doing creates barriers to openness, trust, innovation and flexibility. और ये contradiction बहुत तकलीफदेह और बहुत बुरी होती है कि जब आपकी saying and doing में वो फर्क आ जाए, जब आपके कॉल और फेल में तजाद वो मौजूद हो, तो उस वक्त सारा का सारा जो मामला होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। So these barriers याद रखिएगा कि mostly affect the strategic decisions and executives need feedback concerning their behavior and opportunities to develop self-awareness in action. तो जब तक एग्जेक्टिव्स के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जब तक एग्जेक्टिव्स के पास फीडबैक नहीं है, जब तक एग्जेक्टिव्स के पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स नहीं है, तब तक उनके लिए फैसला करना, सही तौर क्रिएटिव और इनोवेटिव रिजल्ट्स को लेकर आना, नोवेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ऑप्टिमम आउटकम्स हासिल करना, वो सब डिफिकल्ट होगा। वर्ड्स एंड एक्शंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है। हरी अप एंड जॉइन द नेक्स्ट सेशन।